Hello everyone. In this class, we will solve 2 or 3 numerical on the basic of equation of motion. Then we will discuss about velocity time graph, displacement time graph. So, this is your question. And according to your question, an electron travel with a speed of 5 into 10 to the power minus 3 meter per second passes through an electric field with acceleration of 10 to the power minus 12 meter per second square. Then how long time will it take the electron is double its speed, and what will be the distance covered by the electron? So first question I will focus on. So if you solve any numerical, then first you focus in the given data. Then you solve any numerical easily. So first you focus in the given data. So in this question, given data is an electron travel with a speed of 5 into 10 to the power minus 3 meters 5 into 10 minus 3 meter per second. So जेहेतु इन तुम एक्सेलरेशन करिछि तो हम स्पीड को वेलोसिटी कंसीडर करले भी चलो. तो ई वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करमा बिकॉज़ क्वेश्चन रे आउरे वेलोसिटी तुमके दी दीछि. जेते बेले से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड रे पास करूछि सेते बेले तार वेलोसिटी बा स्पीड डबल ही जाउछि. सो हम सेकंड ईयर रे पढ़बो you will teach this electric field. What is the meaning of electric field? If second year 12th, that if suppose this is a electric field and inside the electric field if we place an electron, then this electron get accelerated. The electron get accelerated due to force experienced by the electric field. तमने जो electric field electron ऊपर force पकेबा जब कि electron accelerated हवा. तापर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हला पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने ता स्पीड का ही जाउछ डबल ही जाउछ. सो इन तमन इनिशियल वेलोसिटी भी अछि, फाइनल वेलोसिटी भी अछि. सो इनिशियल वेलोसिटी इन योर क्वेश्चन इज u इज इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 3 meter per second. And with this velocity this electron is passes through the electric field with acceleration 10 to the power minus 2 meter per second square. Then jete se electric field enter kala according to question, when the electric field enter or passes through the electric field, then the speed is double. Double means the final velocity initial velocity jete thila double hi jiba jete se electric field ke dekori electron ta pass karaba according to this question. So 2 into 5 into 10 to the power minus 3 meter per second. Then first question koiche how long time will it take electron each double its speed. Kete time re se tar speed final velocity ke double karoche. So we easily get this value of time because we have already given data is u, v and a. So what is the relationship between u, v and t? We know that v is equal to u plus at. So v janichu, u janichu, a janichu to aram se t pai jibo. So if we separate this value, then it will be v minus u divided by a. Then put the all of the value. V is 2 into 10 to the power, that means it is only 3. 10 square 10 to the power 4 minus u is 5 into 10 to the power 3. Initial velocity is only 3. Then a is 10 to the power minus 2. To solve this question, then you get the answer t is equal to 5 into 10 to the power minus 9. Then focus in second question. Second question का पूछे छे what will be the distance covered by the electron in this time. तो ये जब टाइम बाहरिला in this time period, what will be the distance covered by the electron. So we know that t, u, v, a. Then what is the formula of s or distance? Distance is equal to ut plus half at square. So instead of u will use 5 into 10 to the power 3
t एबे जस्ट पाइलो 5 into 10 to the power minus 9 plus half a पाइलो तमे 10 to the power minus 12 10 to the power minus 12 then t 5 into 10 to the power minus 9 0 square double square. So finally your answer will be 3.75 into 10 to the power minus 5 meter distance. You must be right the answer with the unit, otherwise your mark is cancelled or less mark you obtain if you not represent the unit in your answer. So this is first question. The second question now देखना second question. A driver takes this is your next question, and as for this question, a driver takes 0.02 second to apply the brakes after he sees need for it. तमन ड्राइवर ब्रेक मारुचे काके ब्रेक मारुचे देखो लिखा जाइथिबा if he is driving at a speed of 54 km per hour and brakes cause acceleration a deceleration of 0.6 तो find the distance traveled by the car तमन कार ऊपर ब्रेक मारुचे after he sees need for the brake. That means according to question रे कहचे they find the distance traveled by the car after he sees needs put to brake. तनो ब्रेक मारला परे कार टा केते डिस्टेंस टाइम ट्रैवल कला परे हम डायरेक्ट ब्रेक मारले कार अटकी जीवा सेमती नै ठीक है से डिस्टेंस जाई भी पारे तो ब्रेक मारला परे कार केते डिस्टेंस जाउची तो सेरा हम क्वेश्चन में कहछि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार आफ्टर ही सी नीड पुट द ब्रेक मारवा पाई जेते बेले से चाहेला से टाइम में ब्रेक मारला टाइम रे कार टिके पळे थिबा ना काजे तमर गाड़ी रो ब्रेक जगह रे तमर फुट जीवा पाई केते टाइम तो लागबा तो से टाइम रे गाड़ी किछि दूरता तक पळे जाइथिबा ना तापर ब्रेक हला पर किछि दूरता तक जीवा सो टोटल डिस्टेंस केते कवर करबा जेते बेले से ब्रेक मारबा पाई चाहबा जेते बेले ताके ब्रेक मारबा दरकार होबा तो क्वेश्चन है देखो ए ड्राइवर टेक्स 0.02 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक तार माने सपोज देबा इटा होचे रास्ता इने कार जाउचे तो कार जाउचे तो ई हमर से कार ब्रेक ऊपरे निजर फुट देवा पाई ताके मिनिमम केते टाइम लागला 0.02 सेकंड तार माने ई टाइम में कार जेते बेले ब्रेक मारबा कंडीशन के पळे आसबा ई टाइम में जेहेतु तार फुटटा ब्रेक पाकु जीवा पाई टिके 0.02 सेकंड टाइम लागुची तो से रीजन काजी कार किछि डिस्टेंस तक पळे जाइथिबा ना ब्रेक मारबा कंडीशन रे कार किछि दूरता तक पळे जाइथिबा बिकॉज़ ब्रेक मारबा के जे तमर फुटटा ब्रेक पाइडल ऊपर रहबा के पड़बा तो सेटा काजी किछि टाइम रिक्वायर्ड हबा तो से टाइम रे कार किछि डिस्टेंस तक पळे थिबा तो इफ ही इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर यानी इसका स्पीड केते थिला 54 किलोमीटर पर आवर इटा होचे ता इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी क्या जे इनिशियल वेलोसिटी कहली देखो बुझबो तमे तापर देखो एंड ब्रेक्स कॉज डिसेलेरेशन ब्रेक मारबा तो एबे कार काणे जीवा स्टॉप ही जीवा तो किछि दूरता तक गला परे कार का ब्रेक मारबा द्वारा स्टॉप ही वाला डिसेलेरेशन इसका ना ब्रेक मारबा द्वारा एक्सेलरेशन कमी वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन को कुआ जाउचे डिसेलेरेशन सो एने एक्सेलरेशन विल बी 0.6 मीटर पर सेकंड -2 किंतु इना में साइन कन्वेंशन यूज करना -0.6 साइन कन्वेंशन का यूज करो बिकॉज़ इनो एक्सेलरेशन ब्रेक मारबा द्वारा कमी जाउचे दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन तो माने रखि दिबो जेते बेले एक्सेलरेशन कमी जाउचे सेते बेले वैल्यू पॉजिटिव रे थिले भी तो साइन कन्वेंशन यूज करबो तो ब्रेक मारबा द्वारा इनो एक्सेलरेशन कमी जीबा सो साइन कन्वेंशन माइनस होला देन जेते बेले ब्रेक मारला
गाड़ीटा किसी डिस्टेंस तो गला तापर रही गला सबद केते डिस्टेंस गला s2 तापर रही गला पर फाइनल वेलोसिटी केते हला 0। तो क्वेश्चन में कहते फाइंड द डिस्टेंस। देखो फाइनल वेलोसिटी तुम निजे लिखलो जेहेतु गाड़ी रही गला तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगा। तो कहते क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार आफ्टर सिंगिंग टू पुट द ब्रेक। हमने से ब्रेक मारबा को चाहबा टाइम ने कार केते डिस्टेंस अतिक्रमण कर ब्रेक मारबा को चाहबा टाइम रे से ब्रेक मारबा खाली किछि टाइम लागला से टाइम रे किछि डिस्टेंस पड़े थिला ना तापर ब्रेक मारला पर किछि डिस्टेंस पड़ेला। सो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 है। तो हमें s1 बाहर करमा s2 बाहर करमा माने तम ड्राइवर ब्रेक मारबा पाई जते बेले चाहला टोटल डिस्टेंस केते कवर कला हम जानि पार। तो फर्स्ट ब्रेक मारबा टाइम से केते डिस्टेंस गला हम देखमा डिस्टेंस कवर during 0.02 सेकंड डिस्टेंस s1 जे 0.02 सेकंड लागु छै ताके पाइडल ने मारबा काजे ब्रेक मारबा काजे। तो सेते बेले से डिस्टेंस किछि दूर तक पळेला ब्रेक मारबा पूर्व पळेला किछि दूर तक डिस्टेंस s1 तो तार वैल्यू केते हेबा तो तार वैल्यू हम आराम से जानि पारना जेतु कास का मूव करू छै इनिशियल वेलोसिटी u रे अब केते टाइम लागु छै ताके ब्रेक मारबा पे 0.02। सो एतकी टाइम में से जिते डिस्टेंस पड़े हम आराम से जानि पारना u * t। सो इन तुम्हारा डिस्टेंस का 54 किलोमीटर/आवर ऐसे ने करबो 54 * 5 * 10 to the power 8 ऐसे ने करबो मीटर पर सेकंड then that is about 15 meter per second। so in this case we use 15 and 0.02 में 2 टाइम लागु छै ब्रेक मारबा काजे तो गाड़ी पळे जाउ छै किछि दूरता जाय ब्रेक मारबा समय रे ब्रेक मारबा पूर्वरो ताके 0.02 सेकंड लागला ब्रेक मारबा पई तो से टाइम रे गाड़ी s1 पळेला तो 0.02। so answer will be 3.0 then this time is only 0.2 so 3.0। तो फर्स्ट डिस्टेंस बुझी वाला जे टाइम केते लागु छै गाड़ी ब्रेक मारबा पूर्वरु गाड़ी केते दूर तक पळेला जानि पारलो आज ब्रेक मारबा पूर्वरु तार वेलोसिटी जानि छ टाइम जानि छ तो डिस्टेंस केते पळेला बुझी वाला। एबे तम ब्रेक मारला परे आफ्टर ब्रेक ऑन द कार डिस्टेंस ट्रैवल s2 = एता हबा तो गिवन डाटा देखो आफ्टर ब्रेक मारला पर गिवन डाटा काना दी छै ब्रेक मारला पर तार एक्सीलरेशन कमी जाय छै एक्सीलरेशन हमर क्वेश्चन रे दी छै 6 ओनली 6.0 दैट मींस 6 तो -6 दी छै एक्सीलरेशन हम खाली 6 दी छै जे तो एक्सीलरेशन कम छै माइनस करलो देन आउट काना दी छै फाइनल वेलोसिटी 0 फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी तमे जानि छ 15 मीटर पर सेकंड। so easily we get second distance after the driver brake the car then how much distance it cover s2 we can easily get because we know the relationship between v u a and s that is v square minus u square is equal to 2as2। so only s2 is equal to v square minus u square upon 2a। so v square final velocity as the body is stopped so its final velocity is 0 minus u square initial velocity is 15 square by 2 into a will be 6 into इतना तो फाइनली तुम सॉल्व करबो तो s2 बारी जेबा तमर 18.75। सो फाइनली तुम ब्रेक मारबा पड़े ताकि जते टाइम लागु छे से टाइम में बॉडी केते डिस्टेंस गला s1 तो ब्रेक मारला पर बॉडी डिस्टेंस गला s2 सो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इज s1 plus s2 s is equal to s1 plus s2 that is s1 is equal to 3.0 and s2 is equal to 15.75 that is 21.75 meter। so next we will discuss about displacement time now। displacement
टाइम ग्राफ दिस इज ऑलरेडी मु से कही चे तुमके वेलोसिटी पढ़ेला टाइम में वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेला टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ग्राफ विषय कही दैट मींस द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिव वेलोसिटी व्हिच इज यू हैव ऑलरेडी स्टॉप सो सपोज along x axis we take time in second and along y axis we take displacement in meter. Then suppose with respect to time the displacement covered by a body and a slope which is make an angle theta with the x axis. Then tan theta will be dy upon dx. यानी जब तमें y axis x axis रो पैरेलल x axis बनेबो y axis रो पैरेलल y axis पाइबो तले तमें tan थीटा बाहर करि पारबो और tan थीटा को हमें कहना स्लोप ऑफ द ग्राफ tan थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द ग्राफ व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस उच्चता बाय भूमि तो y रो अपोजिट y हवा और बेस रो अपोजिट बेस दैट मींस y रो अपोजिट y नमा प्लेट और राइट एंगल लीजिबा राइट एंगल लीजिबा तो बेस परपेंडिकुलर बाय बेस दैट मींस y रो अपोजिट y नमा तो y upon x is equal to tan theta so tan theta is equal to dy by dx and tan theta is represent slope of the graph and instead of dy by dx we can be use y2 minus y1 upon x2 minus x1 and in this case along x axis along y axis s is represent so instead of y2 minus y1 we can use or return h2 minus a1 and along x axis we take time so instead of h2 minus x1 we use t2 minus t1 and changing displacement upon changing time which is equal to velocity so you must be know that displacement time graph is represent velocity एबे देखो हम गुडी क्वेश्चन सॉल्व करमा जा द्वारा कि हम क्लियर हो जिबा आ इनो प्रूफ भी अछि प्रूफ भी आके करे मा किंतु आगो केतन क्वेश्चन कर देखो आदि केतन क्वेश्चन करो तापर तुम प्रूफ नेक्स्ट क्लास को करो तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 this is x axis this is y axis O A B C A 10 50 That means along y-axis we represent displacement in meter and along x-axis we represent time in second. So in this question you will calculate the velocity and velocity along OA, AB and BC. Find velocity along OA, AB and BC. So first we calculate the velocity along OA. So velocity along OA. So तमे जानियो velocity आ केनु बारिबा displacement upon time. So displacement y axis रे अछि, time x axis ने अछि. So in this graph we produce a slope. Displacement time graph produce a slope that is dy upon dx. Along y axis displacement अछि, so ds upon along t axis time अछि तो ds upon dt ही पारबा. Which can be used h2 minus s1 divided by t2 minus t1. So, हमें देखी दमा तो देखो हमें OA रे बाहर करना. So O होचे इनिशियल पॉइंट, B होचे फाइनल पॉइंट. So फाइनल पॉइंट रो डिस्प्लेसमेंट हवा तमर h2 और इनिशियल पॉइंट रो डिस्प्लेसमेंट हवा h1. So डिस्प्लेसमेंट केन एक्सिस रो होचे y एक्सिस रो होचे तो y एक्सिस से देखिए कोई डिस्प्लेसमेंट लिखो.
सो देखो S2 OA रे कैलकुलेट करू खाली O होचे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट S1 B A होचे तमर फाइनल डिस्प्लेसमेंट S2 OA रे आमे वेलोसिटी कैलकुलेट करना सो A पॉइंट डिस्प्लेसमेंट आको कैलकुलेट करो because velocity is equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1 सो अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो सो A रो डिस्प्लेसमेंट का S2 रही छु तो केते रहते 10 रे तो S2 जगह 10 माइनस S1 रो डिस्प्लेसमेंट 0 रे अछि 0 किंतु डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के देखि करना तो A सीधा सीधा केन होचे 10 में होचे y एक्सिस तो डिस्प्लेसमेंट 10 है S2 जगह रे तबे बेटा टाइम तो मैं x एक्सिस के निकल देखो तो ये A पॉइंट रो सीधा सीधा कोऑर्डिनेट देखो टाइम केते होचे 10 तो A पॉइंट रो टाइम होचे T2 बिकॉज़ फर्स्ट O रो पॉइंट रो टाइम नामा तो O पॉइंट रो टाइम T1 जेना कि 0 रे होचे 0 और A पॉइंट रो टाइम तम T2 10 और टाइम के तम सब बोले x एक्सिस रो देबो सो इने भी 10 minus c that means in this case velocity is 1 meter per second अब गुडे दुटा क्वेश्चन तम कला पर तम क्लियर हो जिवो एबे देखो along AB रे कैलकुलेट करम सेकंड velocity along AB so you must be know that if the position slope is parallel to the time axis then velocity is always 0 star मारी velocity थिबो if slope is parallel to the time axis then v is equal to 0 v is always 0 proof संगे देखो देखे दउछ मुई in this case also velocity is equal to s2 minus s1 upon t2 minus t1 so तमे ab रे कैलकुलेट करू छ so a पॉइंट के बे धरबो a पॉइंट होचे इनिशियल पॉइंट तो इने डिस्प्लेसमेंट s1 हला अब b पॉइंट रे कैलकुलेट करू छ तो b पॉइंट फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हला s2 अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग सब बेले y एक्सिस रे कैलकुलेट करबो बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस रे अछि सो देखो s2 y एक्सिस रो सीधा सीधा देखो केते 10 माइनस ई a पॉइंट रे s1 रे y एक्सिस रो सीधा सीधा देखो 10 गुटे लाइन रे अछि डिवाइडेड बाय एबे टाइम का तुम x एक्सिस रे कैलकुलेट करो सो x एक्सिस रे देखो x एक्सिस रे टाइम a रो सीधा सीधा देखो 10 t1 टाइम और b फाइनल पॉइंट सीधा सीधा देखो टाइम 15 तो 15 minus 10 आबे बिकॉज़ t2 minus t1 15 minus 10 सो इटा तो 0 ही जीवन तो वेलोसिटी विल बी 0 तो मन रखि दिबो टाइम एक्सिस संग जदी ग्राफ का पैरेलल रहबा सेदेले वेलोसिटी का 0 होसी नेक्स्ट क्वेश्चन next question will be next आउट होचे BC तो BC velocity in BC तो in this case also y axis रे डिस्प्लेसमेंट होचे x axis रे टाइम होचे तो dy by dx रे तमे लगो ds upon dt that means change in displacement upon change in time is give velocity so displacement time graph is give velocity तो देखो अबे BC धरो तो B इनिशियल पॉइंट S1 और C फाइनल पॉइंट S2 तो तमे जाई तो डिस्प्लेसमेंट रो वैल्यूटा सब बोले y एक्सिस आरो धरबो तो देखो इसी पॉइंट S2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा देखो y एक्सिस रो केते जगह नै 15 तो S2 हेबा 15 माइनस देखो एबे S1 सीधा सीधा देखो केते रहते 10 तो S1 हेबा 10 एबे टाइम देखो टाइम ऑलवेज x एक्सिस रे देखो जेतु x एक्सिस रे तमे टाइम नीचो सो देखो तुम BC नीचे BC रो कैलकुलेट करू तो B रो सीधा सीधा देखो टाइम केते अछि 15 तो T1 हला 15 जेतु इनिशियल पॉइंट B एबे देखो C रो सीधा सीधा देखो टाइम केते अछि 20 सो T2 हला 20 जेतु फाइनल पॉइंट C तो T2 minus T1 that is 20 minus 2 that implies 5 upon 5 here also velocity is 1 meter per second so this is your first question then solve another question number 2 along x axis along y axis so this is the graph O A B C
इन बहुत जिनिस शिखबा के मिलबा टी भल कर देख जहाँ जहाँ क्लू पाइब मन रखी पॉइंट आउट करब। तो फास्ट देख इन भी आम डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस अच्छे टाइम एक्स एक्सिस अच्छे। सो टाइम वैल्यू दीचे तुम 5 सेकेंड 15 सेकेंड and finally in this case time is 25 second 25 second. Then in this case at this point displacement is 10 meter. So in this case also we calculate velocity at OA, then AB, then BC. So first I will calculate velocity at OA. So we know that velocity is equal to change in displacement upon change in time. For this graph, here also displacement and time graph. So dy by dx like ds upon dt, which is equal to s2 minus s1 by t2 minus t1. So OA तो O होचे इनिशियल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट s1 धरो, A होचे फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट धरो s2. तो s2 रे तम डिस्प्लेसमेंट केते होगा 10 बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट सब बोले y एक्सिस रो मैं वैल्यू के देखेबो। सो s2 रो सीधा सीधा y एक्सिस रे 10 अछि। सो 10 हैला डिस्प्लेसमेंट माइनस s1 0। एबे टाइम सब बोले x एक्सिस रे अछि तो x एक्सिस रे तम टाइम के देखेबो। तो 4 टाइम ने t1 0 ना t1 रहते 0 माइनस एबे ए जगह थी डिस्प्लेसमेंट s2 का सीधा सीधा देखो टाइम 5 सेकंड तो t2 वाला 5 तो t2 minus t1 तो this is equal to 10 upon 2 that is 5 meter per second. Then velocity at AB is 0 as we have just कही if the slope is parallel to the time axis then velocity is always 0 कही मुई। तो प्रूफ जदि करबा আছে বলে দেখো ইনা भी करि परबो तमे s2 s1 t2 t1 हमने ab तार माने a रे धरलो s1 और b हला फाइनल पॉइंट s2। तो s2 भी देखो y एक्सिस रे 10 अछि और s1 भी देखो सीधा सीधा y एक्सिस रे 10 अछि। y एक्सिस के आज धरलो बिकॉज़ इट डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सब बोले y एक्सिस रे अछि। सो s2 भी 10 और s1 भी 10 तो 10 10 और जहां भी हो 0 ही जवाब बिकॉज़ 10 10 0 ही गला ना। जदि करू चलो देखो s1 तुम x एक्सिस में 5 अछि तो t1 जगह 5 लगलो माइनस s2 x एक्सिस में 15 अछि तो t2 जगह 15 लगलो 0। And then we will calculate the velocity at BC. Velocity at BC BC रे देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है b रू c के जीवन तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s1 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट s2 बुझियाला। तो s1 सीधा सीधा देखो कितना देखो 10 और s2 सीधा सीधा देखो 0। सो इन दिस केस वेलोसिटी इज इक्वल टू s2 minus s1 upon t2 minus t1। सो s2 देखो b इनिशियल पॉइंट s1 c फाइनल पॉइंट s2 तो s2 देखो सीधा सीधा देखो 0 रे अछि y एक्सिस रो s2 जगह 0 माइनस s1 सीधा सीधा देखो y एक्सिस रे 10 अछि बाय एबे देखो s1 रो सीधा सीधा देखो t1 पाइबो x एक्सिस में तो t1 15 और s2 रो सीधा सीधा x एक्सिस रे देखो t2 25 तो 25 t2 और s1 रो सीधा सीधा ना t1 अछि 15 x एक्सिस में। Then in this case velocity is equal to minus 10 upon 10 that is minus 1 meter per second. So इन तुम गोटे जिनिस सिखबा के मिलला जे जदि तुम तलके आसुच मींस तुम डिस्टेंस ता विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तुम डिस्टेंस ता कमी जेते बेले तुम पूरा पूरी तलके आसलो सेते बेले तुम डिस्टेंस 0 ही गला तो वेलोसिटी भी नेगेटिव ही गला। सो तुम जेते बेले तलके आसुच वेलोसिटी ता तुम काना होचे वेलोसिटी ता तुम डिक्रीज हवा
तुम तल के आसो बेले वेलोसिटी टा डिक्रीज हो बिकॉज इफ यू मूव टुवर्ड्स डाउन देन योर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज also decreases, and with respect to decrease of displacement your velocity also decreases. But in this case you moves towards upward direction. That means with respect to time your distance will be increases. So velocity in this case way रे तमर velocity देखो increase होचे किंतु जेहेतु तुम इने बेसी तल के आसुछ तो वेलोसिटी ने काण होछ डिक्रीज and तल के आसले तुम डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कमी होछ देखो इन डिस्टेंस एते थिला ई पॉइंट के आसले डिस्टेंस कमी जीवा ई पॉइंट के आसले आ डिस्टेंस कमी जीवा लास्ट के ई पॉइंट के आसले डिस्टेंस 0 हो जाउछ सो तुम तल के आसुछ डिस्टेंस कमुछे सेटा जे वेलोसिटी कमी जाउछ आ जे तुम ऊपर के जाउछ डिस्टेंस बढ़ुछे तो वेलोसिटी भी बढ़ुछे किंतु इन आउरे फार्मूला मन रखिथिबो जे इन एंगल टा 90 डिग्री रो अधिका अछि सो 90 डिग्री रो अधिका हबा बेले मन रखिथिबो इफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री देन always velocity will be decreased तो तार माने को मन रखिथिबो बाबू माने जे इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो जदी एंगल बढ़ हबा बेले वेलोसिटी इज always decreases मन रखिथिबो अब इने देखो वेलोसिटी बढ़ुछे तो वेलोसिटी बढ़ुछे मींस ई एंगल केते डिग्री 90 डिग्री रु कम सो मन रखिथिबो एंगल 90 डिग्री रु कम रहबा बेले वेलोसिटी बढ़बा अब एंगल 90 डिग्री रु अधिका रहबा बेले वेलोसिटी कम उल्टा रिवर्स होछि एंगल बढ़ रहले वेलोसिटी बढ़ रहबा कथा अब एंगल बढ़ रहले वेलोसिटी बढ़ रहबा नो डाउट किंतु मु 90 डिग्री के बेस कर कहूचे जदि एंगल का 90 डिग्री रु कम रहबा बेले वेलोसिटी बढ़बा और एंगल टा 90 डिग्री रो अधिका ही जीवा बोले देखो डिस्टेंस तल के पड़ जाउ से ना तो एंगल टा 90 डिग्री रो अधिका ही जीवा बोले वेलोसिटी कम बा तो जे कहूचे से जिनिस के भल कर मन रखियो हम ग्राफिकल क्वेश्चन माने पढ़ला बोले यूज करि पारबो समय सो इफ थीटा इज लेसर देन 90 डिग्री यदि 90 डिग्री रो एंगल कमी जीवा बोले ई टाइप रो एंगल 90 डिग्री रो कम आकार होसी तो प्रोट्रैक्टर यूज करथिबो देखबो अब ई टाइप रो एंगल सब 90 डिग्री रो अधिक रहसी सो एंगल जदी 90 डिग्री रो कम रहबा बोले वेलोसिटी में बढ़ुचे सो वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीज इटा होचे फर्स्ट फार्मूला मन रखिबो इटा जे 90 डिग्री रो एंगल अधिक रहबा बोले वेलोसिटी कमी जीवा और 90 डिग्री रो एंगल जदी कम रहबा बोले वेलोसिटी बढ़ी जीवा मन रखिबो और टाइम एक्सिस जदी पैरेलल रहबा बोले वेलोसिटी सब बेले 0 रहबा मन रखिबो तापर हमें नेक्स्ट क्लास आउ अधिका पढ़मा आज एतकी थाउ नेक्स्ट आके हमें पढ़मा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन माने देन हमें पोजीशन टाइम ग्राफ रो ग्राफिकली हमें प्रूफ भी करमा थैंक यू।